who drive the car, you can see in your car also. So what the motive of the project is, when you give a step load on an existing system or on a stable operating point, the deviation in the speed should be minimal. करेक्ट. अगर हमने एसी चालू किया, फैन चालू किया, डिफ्रॉस्ट चालू किया, वाइपर चालू किया, जितना भी इलेक्ट्रिकल लोड है उससे स्पीड में फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए. सो दैट एक तो चीज हो सकती है कि यू बी प्रिपेयर्ड, और योर कंट्रोलर शुड बी वेरी स्ट्रांग टू नेगेट द टॉर्क which is created, electrical load torque which is created by the electrical loads. So in that we used one predictive method. So it will adaptively change the reference value. Let's say कि आपको पता है कि आप गर्मी में ट्रेवल कर रहे हैं, इस टाइम में, इस डेट में, इतने पैसेंजर के साथ एक, तो आप एसी इस टाइम पे ऑन करेंगे. दैट मींस दिस प्रेडिक्शन इज देयर. अकॉर्डिंगली यू विल अडॉप्ट द रेफरेंस स्पीड. आप रेफरेंस को 720 जगह 725 रखेंगे. देन आपका जब आप एसी चालू करेंगे तो एक स्टेप लोड आया, आपकी इंजन स्पीड कम हुई, लेकिन टू अवॉइड द स्टॉलिंग ऑफ द इंजन, कि इंजन जस्ट बंद ना हो जाए. So for that we predicted the load trajectory prediction. जैसे हम इलेक्ट्रिकल लोड्स का हमारा एमपीवी है, एमपीवी इलेक्ट्रिकल लोड प्रेडिक्शन करता होगा कि 6 बजे इतना लोड होगा, 8 बजे इतना लोड होगा. लेकिन इसमें और फैक्टर्स आ जाएंगे, जैसे कि एम्बिएंट कंडीशंस, ड्राइविंग डायनामिक्स, आप चला रहे हैं, आपके पापा चला रहे हैं, कौन अग्रेसिव चला रहा है, कौन स्लो चला रहा है. देन टाइम ऑफ जर्नी, व्हाट टाइम यू आर ट्रैवलिंग. दैट टाइम यू विल लर्निंग मशीन, a machine will learn the data and make a prediction. So we use the n neighbor method, nearest neighbor method to predict the load trajectory. Once load is predicted, your learning prediction unit will give a reference speed for the idle speed controller. Then this will be given. आपका idle speed control engine की speed को idling condition में उतना भी maintain करके रखेगा. Then here engine model is there, and you'll get the engine speed. So this is how the entire closed loop system worked, correct? And this was implemented and tested in the vehicle. So this is just architecture of the solution. So all these things whatever I cited कि जिससे हम डेटा कलेक्शन करेंगे, so all this repeated vehicle operations, अब एक बार चलाया, 2 बार चलाया, कंटिन्यूसली रन करता रहेगा एंड पुराने डेटा को फॉरगेट करता रहेगा, ताकि नए ड्राइवर की कैरेक्टरिस्टिक को भी हम होल्ड कर पाए. इस करंट डेटा, उस डेटा में क्या क्या फीचर लेना है, वन डेटाबेस विल बी देयर व्हिच विल स्टोर द वैल्यूज, देन इन द क्लाउड और इन लोकल मेमोरी एज वेल. देन अ रोलिंग मेथड will pick up the data from the database continuously. It will be picking up with 1 second sampling time, and it will search in the database and give a prediction. Yeah. And our vehicle will work accordingly. So yeah, this was like our this was my MTech. We published research paper on this also, so you can find, I will share the link after this presentation. Now after masters, gave of 2 months, then I joined industry. So in industry again, a new picture, new eyes. What I'm seeing is what is very important in industry is your attitude, how we present ourselves internally. Like if you are like very smart, very intelligent, it's okay, but if your attitude should be acceptive, or like attitude should be very positive, because it is a collaboration industry. One person cannot, this is not a MTech or BTech project that only you have to run the project. It is a collaborative work. So you need to support others, you need to take help from others, learn from others. So your attitude should be positive, and always like ready to do a small effort for others as well. Then timelines are very important in industry. You have to finish certain job in given timeline. In colleges, this freedom we get, okay, assignment 12 बजे करना है, कर देंगे 12 बजे, कल बस डेडलाइन के एक दिन पहले ही तो करना है. लेकिन ये टाइमलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसका फर्दर टेस्टिंग होना है, वैलिडेशन होना है, अगेन बग्स विल कम टू यू, so some buffer you have to take. Then process is also very important in industry ki everything will go through a process. You just cannot run like a small experiment also you want to run, then you need to follow the protocols, all these safety protocols,
uh, all these follow-ups, permissions. Again, that certain things, a new design will pass through a process, design development, then it will go for testing validation, then again go for uh, what to say, ki mass production. Then again, before going mass production, alpha beta testing will happen. Again, it will come to you, clear bugs. So this is the process. Mail follows need to. And here, if any innovation or any new thing is going out of the industry, then it will be protected. So for this, we file the patents. So this is very critical thing in industry research. Then technical facilities is also very good. Like you'll find the latest and very cutting edge technology equipments, like all these new processors you'll get. So whatever we were working on a Texas Instrument processor for motor control unit. So this processor was like very advanced. It has not come in the market itself. Before pre-market, we got the evaluation board, and on that we design and develop our control algorithm. So this very new technologies, you need to get in touch and learn from others, learn from industry, learn from suppliers, learn from vendors, and put it in the vehicle and put it into the product. उसके बाद research, along with the research, development is there. In industry, if you are doing some research, आपका उसको product बनाना ही पड़ेगा. Then only company will invest money on you and on other facilities as well. So research and development is like a very critical thing in the industry. So some companies still in India, if we see, सारे industries का research focus, research की तरफ focus ज़्यादा बढ़ गया है. पहले ये था कि all the supplier based things we used to do, कि ठीक है, अगर हम कोई ले रहे हैं, फोन ले रहे हैं, तो ठीक है, सैमसंग का है, आ जाएगा कुरियर से. व्हीकल है तो व्हीकल ठीक है, हम ले लेंगे सुजुकी का. लेकिन अभी ये कि टाटा wants everything to do inside. Ola Electric, they want everything make in house. So research focus increase हुआ है. This is very good thing. So industry, few more things I'll tell about कि how to be comfortable being uncomfortable. So first thing is mindful acceptance. So means like जब हम इंडस्ट्री में आते हैं तो और किसी भी नई जगह जाते हैं, तो वी शुड बी लाइक इन आवर ब्रेन शुड बी ओपन टू एक्सेप्ट एवरीथिंग. अगर जैसे कि कोई कुछ कर रहा है तो हमसे जज नहीं करना चाहिए. सो फर्स्ट मोमेंट वी जज. सो दिस शुड नॉट बी, दिस इज नॉट हेल्दी प्रैक्टिस इन इंडस्ट्री, आई वुड से, और इन लाइफ एज वेल. एंड we are prone to be in our comfort zone. But industry, if you go in a discomfort zone, then definitely something new will bring from there. तो कुछ ना कुछ हम सीखेंगे. So sometimes it is okay to uneasy or being into discomfort zone. Definitely अगर discomfort है, मतलब हमें कुछ, we are lacking in something. If we are lacking in something, then definitely we'll fight for to get the knowledge or get the capability, and will come with the capability. This is for sure. Positive self talk. So इंडस्ट्री ये होता है कि ठीक है, पीपल आर देयर, सबके अलग अलग फोकस होते हैं. कुछ का फोकस करियर ग्रोथ होता है, कुछ का फोकस होता है कि आई शुड बी इन रिसर्च, कुछ का होता है कि आई जस्ट वांट टू गेट सैलरी एंड गो होम. सो यू शुड बी क्लियर व्हाट यू वांट एंड discard all the negative thoughts. Okay, maybe their reason is different, or reason is this reason, my reason is this, that's why I'm here. So this is like very important to focus on your work, focus on solution. At the end of the day, we need to deliver the solution to the company, and this is what we are doing all the research. So we should be focused. Sometimes it happens as a young engineer, uh, we may deviate from our goal, and we do, even though we are doing work, but we'll do in a different direction. So this should be like in mind where our focus should be, and it should be aligned with the vision. And then develop resellings. So if we be in a uncomfort zone, then all the frustration or all the mental damages should not be present always.
our brain should be like a spring. You compress it again, by the time you'll be in a normal position. So this is resilience. So all the hustle we take, it should not be permanent. You should be like ready to resilience everything and seek support. Never hesitate to seek support from colleagues, from friends, from families, or anyone. You want to get advice, you just ask. This is not a like big thing. Everyone knows everything. Then I would talk about uh, circle of concern, influence, and control. So we read books and we found few things about some theories, some philosophy. But when we in a situation or in a real life, then we feel ki, okay, at some places this are like fitting well. So one of my finding is this: these three circles. So the bottom one, or the central one, is circle of control. So the things will belong in this circle which we can control, or we can our thought can have impact on the on those things, by word, by action. Let's say anything like let's say assignments or exams, assignments or readings. This is very like we have full control on this. We can do assignments. We can do whatever we want. This is our circle of control in life, in academics, in industry, everywhere. And then comes circle of influence. So those things, some that those things we can do. We cannot. It is not in our control. But if you want to get it done, we can get it done by influence. Okay, we'll ask someone to get it done, or will please someone, will order someone to get it done, or sometimes um, I would say we motivate someone to do. Okay, and the last one comes is circle of concern. So there is a wide range of concerns which we have no control over the outcome. Okay, only this is a concern. Okay, climate change हो रहा है, climate change हो रहा है, climate change होगा, हम हम वो हमारा कंसर्न नहीं है, वो हमारा इन्फ्लुएंस होना, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में आना चाहिए कि ओके। तो जनरली व्हाट मीन्स कि मेनी थिंग्स विल पुट इट इन आवर सर्कल ऑफ कंसर्न, एंड अगर हम सर्कल ऑफ कंसर्न में बैठे रहेंगे देन विल पुश द सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस इनसाइड. सो सर्कल ऑफ कंसर्न विल बी बिगर एंड बिगर. कि for any example you can consider about the life, then let's say कि in during MTech, like one lesson with one of my professor was not very healthy. So those it, it is not circle of, it should not lie in the circle of influence, because if you influence, then other things can go wrong. So it is a circle of concern. Irrespective of the other's nature or behavior, I should be focused on my work. So I should stay in circle of control so that I can push the circle of concern behind. So this should be very clear. Unnecessarily concern we should not take. We should not take academics also in industry also. कि ठीक है, इन इंडस्ट्री में ऐसी कि ओके अगर मैं प्रोडक्ट डेवलप कर रहा हूँ, ये प्रोडक्शन में जाएगा कि नहीं जाएगा, प्रोडक्शन में जाना है ले जाना ये काम है प्लानिंग एंड बिजनेस टीम का. आई एम द रिसर्च वन. तो मैं सर्कल ऑफ कंसर्न कंट्रोल में हूँ, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में खेल सकता हूँ. प्रोडक्ट में जाना ये कंसर्न नहीं मेरे लिए, और अगर मैं इसे कुछ भी करूंगा ये मुझे फायदा नहीं करेगा. करेक्ट. So this is one finding I picked it from books. Now, if you say the soft skills, which I found is very important and very useful in industry. So I would tell all the students who are going to be present for placements. So those things will be very helpful. The demonstration of those skills, in development of those skills in yourself, in your personal life, in your behavior, will be very helpful to be in a industry. So influence and persuasion. So uh, this skill is like when you be a leader. So you cannot just lead. You cannot just command others to do the job. It should be influence and persuasion. Like
You by yourself need to start and do the things. You need to start and initiate the work so that others can influence. It should not be like only leader will tell you do this and that. So it should be persuasion, empathy, and authentic leadership. So all the about, if we see anyone like a small technician of your college, or uh, or we can say a director of the college. So you should be empathize others. Any decision if anyone is taking, if technician is not doing your job, you should know the reason instead of just saying कि this is not getting done. और अगर कोई सीनियर लीडरशिप, अगर लेट्स से डायरेक्टर सर कोई डिसीजन लेते हैं, तो वी नीड टू सिट ऑन द, वी नीड टू थिंक अबाउट द पोजीशन एंड द सिनेरियो. तो दिस इज कॉल्ड एम्पैथी, कि वी एम्पैथाइज अदर्स. सो द सेम थिंग वी नीड टू follow in life, happiness and resilience. So always be happy. This is the like core thing. एंड resilience is like अगर छोटे मोटे कुछ चीजें होती है जो परेशान करती है, वो सब चीजें परमानेंट नहीं होनी चाहिए. वी शुड बी इन आवर नेचुरल पोजीशन. स्प्रिंग को तो कितना भी दबा लो, जैसे छोड़ोगे वापस नेचुरल आ ही जाएगा. शुड लाइक दिस. Mindful listening, what people, what others are saying, even like younger, elder, anyone is saying, you have to listen carefully, then only you can give your uh, impactful input in that. Then dealing with difficult people, this is a very like very very I would say कि very common thing, common problem you will find in the industry or everywhere, कि difficult people जो मतलब ये है कि uh, they are not like the way you are thinking कि it will be the response will be like this, उसके उल्टा response होता है. You need to adopt yourself and you see कि this, then this circle empathy and authentic leadership will come into the picture कि okay what he is feeling or what is his requirement. और sometimes influence की जरूरत पड़ती है कि okay he is the one, how he can be influenced, or need to maybe team member is not ready to do a job, then you need to start and initiate by yourself. So all these circles will help you to get rid of this circle. So now if we see the technology trends, so these are ये just रिसर्च था द प्रिंट से मैंने पिक किया. तो टिल 22 इट इज शोइंग कि नाउ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का ग्रोथ रेट इंक्रीज हो रहा है. So and after that also 23, 24, 25, and I would say कि one more decade it will be keep growing. The reason being is कि growing India is advancing in automotive technologies, autonomous EVs, ADAS, along with the computer science and core electrical mechanical branches. Core electrical and electronics is also very important. Every device, everything will be a small computer. That means it needs a electronic design, hardware, electronic software, and everything. Along with these technologies like AI, mathematics, optimization, real-time optimization will be needed. Even on cloud, you are doing optimization. कि हमने neural network को हम tune कर रहे हैं, neural network से हम prediction कर रहे हैं. This is optimization on cloud. लेकिन लेकिन अगर हमें इसे एक स्मॉल चिप में, एक स्मॉल कंप्यूटर में करना है, तो ये कैसे कर सकते हैं कि 25 रुपए की चिप आपके लिए, जिसको हम बोलते हैं एसिक बोलते हैं, कि एप्लीकेशन स्पेसिफिक आईसी जो एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए काम करेगी. तो आपके एल्गोरिदम को इतना कॉम्पैक्ट एंड ऑप्टिमाइज होना पड़ेगा कि वो एक 25 रुपए की आईसी पे भी रन करे फॉर अ वेरी पर्टिकुलर एप्लीकेशन. दिस इज कॉल्ड एज कंप्यूटिंग. एज मतलब हम क्लाउड पे नहीं कर रहे हैं, एज पे कर रहे हैं, एक माइक्रो प्रोसेसर में कर रहे हैं, जो कि मोबाइल होना चाहिए, हर जगह मूव कर सके, जैसे कि व्हीकल हो गया, या फिर मोबाइल हो गया, या फिर टीवी फ्रिज हो गया, या फिर एनीथिंग विच कैन मूव. वी नीड टू मूव लाइक. उसके बाद वन मोर एरिया व्हाट आई सी इज सोलर एनर्जी इज अपकमिंग चैलेंज. Just a second, I'm getting a call past 3-4 times, so I'll just take it. Sorry for the inconvenience.
Okay, screen is visible again, right? So solar energy is like upcoming challenge, which needs a strong power electronics engineers. तो हम ईवीज बिल्ड कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट्स बिल्ड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल ड्रोन्स बिल्ड कर रहे हैं. दैट मीन्स एवरीवेयर मूवेबल एनर्जी की जरूरत है. मूवेबल एनर्जी देन अगेन इवेंचुअली विल नीड रिन्यूएबल एनर्जी. तो हम सोलर एनर्जी सबसे पहला एक रिसोर्स आता है जो कि बहुत ज्यादा बूम कर सकता है. तो अगेन सोलर एनर्जी में एक अगर हम सोलर सेल देखें, इट विल जनरेट आई थिंक 3 वोल्ट, then 3 not sure about the material, लेकिन 3 वोल्ट के आसपास जनरेट करेगा. देन we need to put in series and again all the series का एक वोल्टेज बिल्ड करके we need to connect in parallel all the current need to sync in a one storage. उसके बाद उसका वोल्टेज लेवल मैनेज करना है. देन ओनली द करंट विल फ्लो. वोल्टेज कन्वर्टर्स, all DC DC converter, then DC to AC converters, and all those should be very efficient and less expensive, correct, and reliable. तो इस एरिया में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स की ह्यूज डिमांड होगी. एंड ऑल दिस ऑल whatever the you are studying, all it contains like almost everything which is in technology trend. We read mathematics, analog electronics, digital electronics, power electronics, VLSI. Yeah, one more thing to be added, VLSI is the again upcoming huge like technology demand, technology engineer demand will be coming in semiconductor, क्योंकि we need to make lot of ASICs, application specific ICs, and high technology like high technology semiconductors, जो कि जिनका फीचर साइज कम होता जाए. अभी 6 नैनोमीटर पे काम हो रहा है, उससे और कम. So all these core electronics companies, I would I see ki in these companies people are doing very like core job and with a good level of satisfaction. What one electronics engineer should get, कि ये सब इतना सब अगर पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में तो इसका कहाँ मैं यूज लूँ. तो I experienced in TVS and Ola Electric. People are there, our seniors or juniors colleagues are there in Eton. One colleague in Eton, Tata Elxsi, Tata Motors, Smithworks, ABB, Samsung, TI, all these companies are doing good job in core. So now I would take you the EV system architecture. So I started my career with ECU design for IC engine vehicle. In that we developed OBD2 algorithms. So we used to work on one NXP processor. On that we used to develop all things. After that we work on BMS. So BMS एक electric vehicle का part है. Now again I am working on a motor control unit. So I'll just explain you the how EV architecture is there, how everything will be there in the vehicle. So in this is just scalable for 2-wheeler and 4-wheeler. The system architecture will be similar. So here vehicle control unit is there. Vehicle control unit which will take all the information from user, from the existing units, and take a decision and command others to perform the job, correct. So so first we'll start from the HMI, human machine interface. You see the display on the vehicle. So it is connected through a CAN bus. CAN bus in automotive we follow a control area network protocol for the communication. In CAN communication, one common bus will be there and all other nodes will be connected like this. This is one node. This is one node. This is HMI. It is having one microprocessor. So all the information, if you touch a single button or you want to change the mode of the ride, sport mode to hyper mode, this information will go to CAN bus, it will be written there, and this information will be shared on the CAN bus and it will be read by the vehicle control unit. Vehicle control unit will check the conditions. Okay, you want to change the sport mode, you're already riding in the normal mode. All the temperature and everything is feasible to change the mode. You can go in a sport mode or more speed, more torque you can generate, motor can generate. Then this will command to change the mode on the same CAN bus.
same command will be read by the motor control unit. Now the motor control unit is the um, is a unit which operates the inverter. We are getting a DC voltage, DC 48 voltage, or in car 400 volt DC. So DC voltage will get from here. In top of that, one more microprocessor is there in BMS, battery management system. So here it will it will measure the current drawn from the battery and the temperature of the cell. What is the state of the cell charge? How much storage, or what is the state of the charge of the battery? That will be continuously estimating. So initially I worked on BMS. So in that real time, we used to estimate the state of charge, how much percentage of charging is there in the cell, using a Kalman filter method. So Kalman filter estimation is a the Gaussian distribution application of Gaussian distribution method. So maybe if we will be interested, then we'll talk more about the Kalman filter estimation. It is a very good filter which is widely used in the industry for n number of applications. So BMS is having a microcontroller. The same information, current limits, voltage limits, how much voltage is there, terminal voltage, current is drawn, temperature, everything it will publish on the canvas. And so from 48, one DC-DC converter is connected, which will convert 48 to 12 volt, which will operate the VCU unit and HMI unit, because all things are powered up by 12 volt. Okay, so now 48 volt will be given to the MCU. We are here, vehicle control unit told ki now my vehicle speed should be behave like a sport mode. If I give a throttle, it should generate more torque, correct? Now motor control will be here. It will run a control loop inside, which will be which may control in field oriented control way, or 6-step computation in reading machine. So in what I work, that was PMSM motor, permanent magnet synchronous machine. So one current control loop will be running in the MCU, and it will command inverters to switch in such a way कि ज़्यादा torque control. And this inverter will operate the PMSM motor and will generate more torque on the wheel. Again, one more line will be here. MCU current, yeah. MCU सारे इंफॉर्मेशन कैन बस को भेजता है कि कितना मोटर टॉर्क जनरेट हुआ, कितना करंट ड्रॉ हुआ, कितना आरपीएम अभी मोटर का है. ये सब चीजें कैनवस पे रहेंगी, जो कि कैनवस पे व्हीकल इसकी स्पीड रहेगी किलोमीटर पर आवर में पब्लिश, यहाँ स्पीड हम पब्लिश करेंगे. देन एचएमआई विल रीड एंड शो इट टू द कस्टमर राइडर कि भैया ये स्पीड आपकी व्हीकल की है. देन ट्रैक्शन कंट्रोल यूनिट विल बी इन पिक्चर कि ये डायरेक्टली व्हीकल से इंटरेक्ट करेगा. अगर आरपीएम आया है, व्हीकल आरपीएम एंड मोटर आरपीएम में और कुछ डिफरेंस है, मतलब स्लिप हो रहा है व्हीकल, स्लिप फैक्टर है, तो कैसे काम करना चाहिए. अगर एबीएस हम लगा रहे हैं तो एबीएस प्रेस करने एंटी ब्रेकिंग सिस्टम अल्टीमेटली रिलेटिव वेलोसिटी 0 नहीं होने देना है, थोड़ा ब्रेक एंटी ब्रेकिंग करना है. तो उस टाइम पे ट्रैक्शन कंट्रोल यूनिट पिक्चर में आता है. अगेन इट विल टॉक विद द मोटर कंट्रोल एंड डू अ joint control with the MCU. Okay, so here almost this structure will be followed by all the electric vehicles, all the key elements of the vehicle. Now we see the academic industrial link. How we study in academics, let's say filter हम use पढ़ते हैं, then we use FIR filters को signal processing की phase current के signals आ रहे हैं, it should contain noise, उसको filter करना पड़ेगा, and what frequency पे filter करना है is very critical thing. We design FIR filters. We use root locus before defining the step MCU control. How to do the pole placement कि हम जैसे हमने पहले बोला था कि हम root locus देखते हैं कि closed loop जब हो जाएगा तब उसका पोल्स कहाँ रखे जाए ताकि सिस्टम स्टेबल हो एंड डिजायर्ड परफॉर्मेंस भी गेट. उसका स्टेडी स्टेट टाइम कितना होना चाहिए, सेटलिंग टाइम कितना होना चाहिए. अगर ओवरशूट तो नहीं आ रहा है, ओवरशूट आ रहा है तो हम केडी को कम करें, डिफरेंशिएटिव गेन को कम करें. अगर स्टेडी स्टेट एरर कम करना है तो केआई को बढ़ाएं हम. ये सब चीजें वी नीड टू ट्यून इट एंड डिजाइन आवर डिजायर्ड कंट्रोल. एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ पे यूज होता है कि हम एम्पलीफायर्स यूज करते हैं, फिल्टर्स यूज करते हैं, सिग्नल कंडीशनिंग की आपका
स्मॉल सिग्नल आ रहा है सेंसर से, आप उसको एमसीयू को रीड करना है कुछ और स्केल में, देन वी नीड टू इंक्रीज इट। मॉसफेट ऑपरेशन, मॉसफेट्स ऑपरेट करते हैं कि इन्वर्टर के लिए कितनी फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट होना चाहिए, तो इसका कैपेसिटेंस या डिस्चार्ज टाइमिंग कितना होना पड़ेगा, इसको ऑन और ऑफ होने में कितना टाइम लगेगा। ऑल दिस थिंग्स नीड टू बी कंसिडर्ड फॉर अ डिजाइनर, तो इसलिए ये सब चीजें काम आती है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिक बिल्डिंग फॉर मॉडल, कि आपका इस मोड से जाना है तो क्या लॉजिक होगा। देन माइक्रो प्रोसेसर पे हम लो लेवल प्रोग्रामिंग करते हैं, ऑल दिस थिंग की इन वेरी पर्टिकुलर रजिस्टर की इफ इट इज इतना मेमोरी है, कोड जनरेशन में अगर इतने के बी का कोड होगा तो ये कहाँ से कहाँ तक, किस मेमोरी से किस मेमोरी तक बैठेगा कोड, एंड हाउ मच टाइम इट विल टेक टू एग्जीक्यूट ऑल दिस मेमोरी एलोकेशन, टाइमर्स, इंटरप्ट्स, कितने टाइम में एक इंटरप्ट आना चाहिए, कितने डिफरेंट टाइमर्स वी नीड टू सेट, ऑल दिस थिंग, वॉचडॉग इंटरप्ट्स, और जैसे कि एडीसी रीडिंग, all analog digital converter, or DAC deck also we need to do sometimes, CAN communication we need to send the messages to on the bus. उसके बाद सिस्टम आइडेंटिफिकेशन, those we I think we don't read in our curriculum, but in masters you'll find system identification, या मैथमेटिकल सिस्टम ट्रांजिएंट टाइम बाउंडेड और डायनेमिक सिस्टम को हम एक ट्रांसफंक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। So we do state of charge estimation in BMS, that we found application of this. Semiconductor devices and power electronics. So those are like very useful thing when we design. We see the inverter design in MCU. Any failure happens in MCU, तो कहाँ पे क्यों हो रहा है, इसके ऑन और ऑफ टाइमिंग का टाइमिंग करेक्ट है, जो गिवन डिले है अप्रोप्रिएट है। एलएलसी चार्जर डिजाइन भी डू, आप एक एलएलसी टैंक होगा, उसको चार्ज करने के लिए वोल्टेज को मेंटेन रख के करंट की डिमांड को कम ज्यादा फॉलो करें। सो इसके लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द पॉलिट्रॉनिक्स एज वेल। नाउ वी सी अबाउट द प्रोडक्ट डिजाइन मेथोडोलॉजी। तो इंडस्ट्री में प्रोडक्ट कैसे डिजाइन एंड डेवलप होता है, तो मैं एक प्रोडक्ट लेके शुरू करता हूँ। जैसे हमने एमसीयू डिजाइन किया, मोटर कंट्रोल यूनिट, तो पहले बिजनेस प्लानिंग से एक रिक्वायरमेंट आएगी कि ओके भैया हमें 15 किलोवाट का मोटर पीक पावर होना चाहिए, एंड 115 मैक्सिमम स्पीड जानी चाहिए व्हीकल की, एंड इतना इतना प्राइस है इस प्रोसेसर, इतना इतना प्राइस है, इतना बजट में हमें एमसीयू बनाना है। दिस इज बिजनेस प्लानिंग, वेरी टॉप व्यू, ओनली स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशंस, बजट एंड टाइमलाइंस। देन विल कम टू द आर्किटेक्चर। उसका आर्किटेक्चर में अगर ये रिक्वायरमेंट है तो इस गिवन बजट में हमें कौन सा प्रोसेसर यूज करना चाहिए, कितने टास्क होंगे। लेट्स से कि one task is to run the model, do the control, speed control, other is to send the messages, task की शेड्यूलिंग, कितने मिलीसेकंड में कौन सा टास्क होगा, कितने पेरिफेरल्स होंगे, कितने इनपुट आउटपुट पिंस की जरूरत पड़ेगी मुझे, कितने नंबर ऑफ सेंसर्स लग रहे हैं, स्पीड सेंसर, लाइट सेंसर, और व्हाट एवर ऑल द सेंसर्स, जीपीआईयूज, कितने जीपीआईयू बनाने पड़ेंगे, कितनी मेमोरी है, कोड सेक्शंस क्या क्या होंगे, कि कौन सा कंप्यूटेशन क्रिटिकल टास्क है, वो कोड के सेक्शन में रन होगा। ऑल दिस थिंग्स विल बी डिसाइडेड इन आर्किटेक्ट इन द आर्किटेक्चर लेवल। देन इट कम्स टू मॉडल इंप्लीमेंटेशन। यहाँ पे टेक्नोलॉजी सिलेक्शन होता है कि लेट्स से कि हमें मोटर कंट्रोल करना है, तो हम कैसे करें, फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल यूज करें, या फिर स्टेट 6 स्टेप कंप्यूटेशन यूज करें, या फिर कोई और चीपर टेक्नोलॉजी, या फिर मोर एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करना है। यहाँ पे एल्गोरिथम डेवलपमेंट होता है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट होता है कि वी मेक वन एल्गोरिथम, वी ट्राई ऑन द हिल, जिसमें हार्डवेयर इन लूप होगा या फिर मॉडल इन लूप होगा, वो सब में करते हैं, एंड वी सी देन मॉडल डेवलपमेंट। उसके साथ बेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जहाँ पे हम एडीसीज को, पेरिफेरल्स को रीड करते हैं और मॉडल के साथ इंटरेक्ट करके अपना जॉब डन करते हैं अल्टीमेटली। तो ये सब इम्प्लीमेंटेशन, मॉडल इम्प्लीमेंटेशन में होता है। देन कोड जनरेशन, ओके वंस योर थिंग इज डन, पीओसी इज डन, यू विल डू द कोड जनरेशन। मॉडल के लिए मे बी इसके लिए मेटलैब यूज करते हैं, या फिर कोई अगर हैंडरिटन कोड होता है तो वो वहां से कोड जनरेशन एंड कोड इंटीग्रेशन होता है। सारे यूनिट कैन पे कम्युनिकेशन हो रहा है या फिर ब्लूटूथ से कम्युनिकेशन हो रहा है, तो टीएक्स आरएक्स को इंटीग्रेट किया जाता है। The other side of this thing, V model is like mostly verification and validation. Whatever development we did here, let's say कि हमने वापस इसको नीचे से शुरू करेंगे, हमने कोड जनरेशन किया तो उसका हम सॉफ्टवेयर इन लूप करेंगे। सॉफ्टवेयर लूप में कर लिया कि ठीक है, कोई कोड अटक, कोई कोड फंस नहीं रहा है, कोई टाइमर ओवरफ्लो नहीं हो रहा है, कोई रजिस्टर ओवरफ्लो नहीं हो रहा है, टाइमर टाइम आउट नहीं हो रहा है,
सब कुछ चीजें ऑन टाइम हो रही है, कोड का री इनिशियलाइजेशन सही हो रहा है, ये सब कुछ सेल में हो जाएगा, सॉफ्टवेयर इन लूप। देन अगर हम मॉडल हमने बनाया है मेटलैब में, तो मॉडल इन लूप टेस्ट होगा, मिल टेस्ट होगा, कि अगर इस कंडीशन में इसका स्विचिंग यहाँ से यहाँ होना चाहिए, ये कंडीशन ये पाथ चूज करना चाहिए जो करेक्ट है, सारी कंडीशन मीट करने के बाद आपका मॉडल करेक्टली बिहेव कर रहा है। एंड अगर सेम कोड का कोड जनरेशन करेंगे और प्रोसेसर में जाएगा तो कैसे बिहेव करेगा, तो सेम इज पीआईएल वाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि मॉडल कैसे किस वेरिएबल का डेटा टाइप कौन सा जनरेट कर रहा है, एंड इट शुड नॉट बी मिसमैच्ड, इसलिए उसके बाद पिल होता है प्रोसेसर इन लूप। उसके बाद हम अगर देखें, हमने आर्किटेक्चर बनाया था, उसका हमें वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, तो हम मिल पिल करने के बाद हमने इंटीग्रेट कर लिया, ऊपर जाएंगे, इंटीग्रेशन टेस्ट होगा। इंटीग्रेशन टेस्ट होगा आपका हिल में, मतलब आपके पास हार्डवेयर बोर्ड रेडी है, आपने उसमें कोड जनरेट करके माइक्रो प्रोसेसर में फ्लैश कर दिया है, देन आपके पास एक सिस्टम होगा जो कि डिजिटल डेक सिस्टम होगा, डी स्पेस या फिर ओपल आरटी, ये सब कंपनीज है। हिल में होने के बाद आप जाएंगे व्हीकल लेवल पे, देन व्हीकल लेवल में इंटीग्रेट किया, देन ऑन दैट ऑल्सो डायरेक्टली हम व्हीकल में कस्टमर या फिर ह्यूमन के साथ नहीं राइड कर सकते, हमें रन करना पड़ता है डायनो के साथ, तो डायनोमीटर बेस्ड टेस्टिंग होगी, चेसी डायनो, मतलब ओनली व्हीकल विल माउंटेड ऑन चेसी and it will run the motor, different road conditions will be generated, different torque hill condition generate की वहां पे रन करके देखा, then it is like road worthy software and vehicle will be ready, then for that acceptance test will be done, उसके बाद होमोलोगेशन होगा, गवर्नमेंट आपको परमिशन देगी, देन आपका प्रोडक्ट बेचने लायक बन जाएगा। मास प्रोडक्शन में जाना है, ये एक प्रोडक्ट के लिए, मास प्रोडक्शन के लिए भी बहुत सारे टेस्ट हैं। तो दिस वी साइकिल वी मॉडल वी फॉलो इन R&D to design a new product. Then this is like end of my presentation. So during my masters, BTech and masters, and throughout my journey, I inspired by these professors and different people. So I'm very thankful to our SOD sir, Dr. Rajesh Khatri sir. He taught us all semiconductor devices and transmission line and power electronics. All these things are very important and it helped me a lot during my career. And Professor D.S. Ajnar sir, so he taught us two-port network and filter design, networks, NAS. These are very important and very helpful. Dr. R.C. Gurjar sir, he taught us microprocessor, so which I'm working on. So I'm very thankful to Dr. R.C. Gurjar sir. Professor R.S. Mandloi sir, he taught us power electronics, all these things, inverters, buck boost converters, everything he taught. It is very helpful in my career. Our ex-professor, Biswarup Sarkar sir, he taught us control system. My here team lead, Dr. Himadri Vidas, in Ola Electric is director. So he gave me a good freedom and good edge of doing new things, which helped me a lot in growth of my career, and we explored many things. And my father, Mr. Sevagram Mandloi, is a farmer. So he helped me throughout the life and never told me to never hesitate to try new things and give your 100% on new things. Then only you can see the difference. So all these things. And now, so our session is almost completed. All the questions you can ask, whatever surprise you or curious. Now we'll encourage this vibrant session by directly engaging with sir. So please feel free to ask your doubts and questions. Hello, sir. My name is Shoaib Hussain, EI second year. Okay, okay. सर आपने ये सारे प्रोजेक्ट्स आईटी के बाद बनाए थे या उससे पहले बीटेक करने के टाइम पे? नहीं, बीटेक के टाइम पे हमारा मोस्टली हमने FIR फिल्टर वाला जो प्रोजेक्ट था वो किया था।
उसके बाद मास्टर्स में कुछ काम था, एंड व्हाट आर द जो सब चीजें मैंने बताई ये सब इंडस्ट्री में आने के बाद हुआ। तो बीटेक के टाइम पे एफआईआर फिल्टर डिजाइन तक किया था मैंने। उसके बाद मास्टर्स में भी बहुत कुछ सीखने को मिला। ओके, अदर देन आपने सर एकेडमिक्स भी कुछ क्वेश्चंस हो तो पूछो तो। Good afternoon, हाँ, sir. है। Sir, my question is simple. Sir, मतलब embedded systems में ओके, अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारा। क्वेश्चन मतलब बहुत थॉटफुल है। तो मैं थोड़ा सोच के बताता हूँ कि देखो, एम्बेडेड इंजीनियर में जो एक बेसिक चीज है कि सिस्टम नॉलेज। तो जो भी सिस्टम हम एम्बेडेड इंजीनियर इज जस्ट नॉट लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर कि आप जस्ट कोडिंग करते रहेंगे आपको रिजल्ट मिलते रहेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। एम्बेडेड इंजीनियर के लिए आपको सिस्टम लेवल पता होना चाहिए और आपको इंटरेस्ट होना चाहिए चीजें जानने के लिए। जैसे अगर मैं, और ये एक जेनरिक नहीं है, आप मतलब पढ़ के नहीं आ सकते हैं, सब चीजें एक्सपीरियंस करनी हो रही होगी, करेक्ट। तो लेट्स मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ कि previously I was working on BMS, then I switched on MCU, motor control unit design. It was a very new project. आपको मोटर के बारे में पता नहीं है, आपने बस पढ़ा है बीटेक में कुछ मशीन होता है, ठीक है। तो यू रीड अबाउट पीएमएसएम मोटर, उसके बाद ये पढ़ा है, ठीक है, ओके, जस्ट प्रिंसिपल है पीएमएसएम मोटर, हम बीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया था हमने, तो वो फटाफट लिंक हो जाता है, करेक्ट। तो सिस्टम लेवल नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एम्बेडेड इंजीनियर, कि आपको सिस्टम लेवल कैसे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स काम करती है, कैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स काम करती है, रजिस्टर्स कैसे काम करते हैं, किस जिस जो हम बीटेक सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं माइक्रो प्रोसेसर रजिस्टर लेवल पे काम, अब वो सब कैसे काम करता है, ये सब चीजें हेल्प करती है। उसके बाद अ, उसके बाद एम्बेडेड इंजीनियर में आपको, हाँ, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल पता होना चाहिए। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में जैसे यूआर्ट हो गया, या फिर एसपीआई कम्युनिकेशन हो गया, या फिर कैन कम्युनिकेशन हो गया, ये सब चीजें डिजायर्ड होती है। उसके बाद देखा जाए तो एम्बेडेड सी, मोस्टली एम्बेडेड सी में I would say for being an engineer, embedded engineer, three things are required. Basic C, that will give you the logic building. System level knowledge, whatever the technical things you studied, it will help in new problem debugging. And third thing is communication protocol, कि कैसे कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है कंप्यूटर के साथ, मतलब आपके जो एप्लीकेशन स्पेसिफिक कंप्यूटर है, चिप है, उसके साथ कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है। ये तीन चार चीजें। सुमित, ये आंसर करता है क्वेश्चन को? yes, sir. मेरे को लगता है कि काफी इतना थैंक यू सर। बाय द टाइम तुम भी क्वेश्चन पूछना, मैं पूछता हूँ कि अभी इंटर्नशिप के लिए क्या प्रोसीजर होता है हमारे यहाँ, मतलब इन कुछ तुम इंटर्नशिप के लिए ट्राई कर रहे हो आउटसाइड, या फिर कुछ कंपनीज आ रही है अप्रोच करती है? एक्सक्यूज मी सर। सर हाँ एक और डाउट है बच्चे का, तो वो आप क्लियर कर हाँ, दीजिए, फिर हम क्लियर मतलब एक्सप्लेन कर देंगे आपको। ठीक है, बताइए। Good evening, sir. Myself Supreet Prajapati from Bhopal, second year, electronics and instrumentation. सर एक्चुअली मेरा डाउट ये था कि हम लोग सेकेंड ईयर में हैं, तो हमें कुछ ऐसा आइडिया नहीं है कि फ्रंट लाइन्स में इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। सो इफ़ यू कुड एक्सप्लेन कि व्हाट आर द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज राइट देयर इन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। सो जैसे मैंने पूरा प्रेजेंटेशन में भी दिखाया है कि हम मतलब इंडस्ट्री में क्या क्या चीजें यूज करते हैं। तो उस हिसाब से देखें तो अभी मोस्टली एम्बेडेड सिस्टम डेवलपमेंट पे काम चल रहा है, आईओटी पे काम चल रहा है। दूसरी साइड देखें तो दूसरी साइड देखें तो एडास ऑटोनोमस व्हीकल पे काम चल रहा है।
ऑटोनॉमस व्हीकल मीन्स ऑटोनॉमस मीन्स कि आपका इमेज प्रोसेसिंग एंड डेटा सेंसिंग, देन देन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, आपका जो एलडीए ईडीए डिजाइन है, ईडीए डिजाइन इंडस्ट्री फ्रंट पे काम चल रहा है। ईडीए डिजाइन मीन्स कि प्रोसेसर आपका है, तो प्रोसेसर में कैसे ट्रांजिस्टर्स कहाँ लगेंगे, कैसे बैठेंगे, तो सेमीकंडक्टर साइड इस चीज में चल रहा है। तो उसका रूट हमें बेसिक्स मिलेगा हमारे बीटेक में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और वीएलएसआई करके बाद में सब्जेक्ट होता है वहां से। तो मैं तुम्हारा कंसर्न ये समझ रहा हूँ कि हाउ टू शेप आवर करियर, कि ठीक है मतलब 4 साल या 2 साल बाद अगर हम इंडस्ट्री को देखें तो किन चीजों पे काम कर रही होगी, करेक्ट? सो मोस्टली आई वुड से एम्बेडेड सिस्टम, सेमीकंडक्टर्स एंड सिग्नल प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग, ये सब भी अच्छी चीजें हैं जो इंडस्ट्री को जरूरत पड़ेगी। एंड कंट्रोल सिस्टम इज लाइक एवरीवेयर यू आर गोइंग टू यूज कंट्रोल इंजीनियर्स नेक्स्ट डिकेड। कंट्रोल इंजीनियर्स के लिए अच्छा काम रहेगा, जो कि हमारे इंजीनियर का भी, बैचलर्स का भी पार्ट है ईआई में। So, सर डाउट्स आर ओवर। ओके, सो हाँ, ये मैं पूछ रहा था कि इंटर्नशिप के लिए अभी क्या होता है, तुम इंटर्नशिप कैसे प्लान करते हो या फिर क्या करते हो? हेलो, हाँ, हेलो, दीपक आरसी गुर्जर हियर। हाँ सर, गुड इवनिंग हाँ, सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। इंटर्नशिप के लिए जो सेमेस्टर बी के बाद में इनका रहता है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल सेमेस्टर ए के बाद में, हाँ सर। है ना। सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को 2 महीने का ब्रेक मिलता है, अच्छा सर। मतलब फोर्थ सेम में जब फिफ्थ सेमेस्टर में जाता है, हाँ और सिमिलरली वो सिक्स सेम से सेवन सेमेस्टर में जाता है। हाँ सर। तो 2 महीने का ब्रेक तो यहाँ मिलता है, हाँ सर। और आफ्टर कंप्लीटिंग द सेवन सेमेस्टर, एट सेमेस्टर फुली इंटर्नशिप के लिए रहता है ना। अच्छा सर। हाँ, तो हाँ सर, मैं वही स्टूडेंट्स को एनकरेज करूंगा कि बहुत सारी कोर कंपनीज जो कि अच्छे स्टूडेंट्स चाहती है कि उनके साथ काम मिलके काम करें, क्योंकि इंटर्नशिप डजंट गेट जस्ट स्टूडेंट बट इट गेट्स अ न्यू ब्रेन, जो कि सीधे कॉलेज से आ रहा है, जो कि बहुत सारी चीजें ट्राई करना चाहता है। तो सब इन कंपनीज को इंटर्नशिप के लिए अप्रोच करें, खुद से करें या फिर कॉलेज के थ्रू करें। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द करियर एंड गेट अ इनसाइट ऑफ द इंडस्ट्री। एक क्वेश्चन था कि सपोज एम्बेडेड में कोई बच्चा इंटर्नशिप करना चाहता है, तो मिनिमम प्रीरिक्विजिट क्या होना चाहिए उसके लिए, क्योंकि इंटर्नशिप ऐसे भी कोई कंपनी ऑफर नहीं करती है, एटलीस्ट कुछ प्रीरिक्विजिट चाहिए होता है। हाँ, सर प्लीज रिक्विजिट एक इन टर्म्स ऑफ कोडिंग और इन टर्म्स ऑफ। सर अगर हम किसी एक प्रोसेसर पे एक्सपीरियंस रखें, जैसे कि अगर कंपनी अगर स्टैंडर्ड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड देखें तो हम एनएक्सपी या फिर टीआई के प्रोसेसर बहुत ज्यादा यूज करते हैं इंडस्ट्री में, दैट इज इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रोसेसर्स। तो उन सब के प्रोसेसर पे अगर थोड़ा एक्सपीरियंस हो, सो इट इज इजी फॉर इंडस्ट्री टू लिंक द डायरेक्ट प्रोजेक्ट्स, या फिर ये कर सकते हैं। दूसरी चीज बेसिक सी इज ऑल्सो कोडिंग साइड अगर देखें तो बेसिक सी कोडिंग एंड लॉजिक बिल्डिंग इज इनफ। तीसरी चीज की अगर हम जिस इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं, जैसे मैं ऑटोमोटिव में है, पिछला 5 साल एक्सपीरियंस ऑटोमोटिव में है, तो ऑटोमोटिव में हम मोस्टली कम्युनिकेशन, इन पे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल भी अगर किसी को नोट है, कैन कम्युनिकेशन हो गया, कैन कम्युनिकेशन या फिर एसपीआई कम्युनिकेशन, यूआरट कम्युनिकेशन। तो वन थिंग इज वेरी क्लियर, ओके कि ठीक है हाउ द डेटा इज फ्लोइंग, और ये मतलब ये कंफर्म, ये ठीक है कि यार ही नोज अबाउट द प्रोटोकॉल्स व्हाट इंडस्ट्री इज फॉलोइंग। तो ये चीज भी इंटर्नशिप में वेरी हेल्पफुल हो जाती है। ओके ओके। Vedic, I may ask you to kindly end the session. As we conclude this gathering, let's carry forward the spirit of learning, innovation, and excellence. Thank you everyone for joining us in this session today. The SGSITS community extends heartfelt gratitude to Mr. Deepak Mandloi sir
for sharing his incredible journey with us and answering our doubts. As you embark on future endeavors, sir, may success, fulfillment here accompany to every step of the way. We wish you all the best for all the future endeavors, and we eagerly await the opportunity to learn and grow under your guidance. Thank you so much, sir. Yeah, Vaidehi, thank you so much. And thank you. So I would thank all the students, all the professors, and the SGSITS Alumni Association. It gave me opportunity to connect again with my college again and all the students again. So it was a great opportunity. And I would request Akshat and Vaidehi to share the feedback, whatever the feedback you felt, and people around, like people in the class who attended, what the experience they feel, वो तुम एक बार शेयर करो, या फिर अगर श्योर सर। Sure, कुछ sir. We will do. क्वेश्चंस कुछ क्वेश्चंस है अगर कि ठीक है, अगर इसमें हमें और फ्यूचर और फर्दर टॉक करनी चाहिए, then again we can schedule another session. It will be very pleasure for me to interact you all again. Yes, sir. Thank you so much. Yeah, Thank you, sir. thank you. Okay, thank you. Bye.